Ladies and gentlemen, I'm Gord Krantz, Mayor of the town of Milton. Whatever you do, please keep watching Toronto 360 TV, the best in the country. Have a great day. Stay healthy. Stay safe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब टोरंटो 360 की टीम यहाँ पर मौजूद है एक बड़ी सेरेमनी को कवर करने के लिए। और वो सेरेमनी आप यकीनन ब्यूटीफुल सेरेमनी जो हर साल जो अक्टूबर के महीने के अंदर आती है, मुस्लिम हेरिटेज मंथ। टाउन ऑफ मिल्टन ने जो है वो प्रोक्लेम करना है। आज यहाँ पर मेयर यहाँ पर और यहाँ के जो काउंसलर हैं, पुलिस के लोग हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर हैं, वो यकीनन जो है इस प्रोग्राम के अंदर अभी थोड़ी देर बाद जो है ना वो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, मुस्लिम हेरिटेज मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी बड़ी अहमियत है। 2007 में फेडरल गवर्नमेंट ने जो है इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया और कैलगरी के अंदर इसको शुरू किया था। और यहाँ पर जो है वो उस वक्त से लेकर जो है ना इसको शुरू किया गया। लेकिन बाद में जो है अंटारियो गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर एक बिल 23 लेकर आए और उस बिल 23 के अंदर ये जो महीना है अक्टूबर का, उसको मुसलमानों का हेरिटेज मंथ प्रोक्लेम किया गया। और हर साल जो है उसके बाद जो है वो अंटारियो गवर्नमेंट स्पेशली जो है उसकी एडवाइजरी देती है और तमाम टाउन्स को, तमाम सिटीज़ को। तो आज ये टाउन की जो महफिल है वो भी इसी तरीके से सजाई गई है। इसी तरीके से इसी तरह की महफिलें दूसरी जगहों पर भी सजाई गई हैं। पैट्रिक ब्राउन को भी मैंने देखा था कि उन्होंने जो है एक सेरेमनी सजाई है, इसी तरह मिसिसागा सजा रहा है। तो ये जो है एक ब्यूटीफुल हमारे लिए इंपॉर्टेंस है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि हम अपने जो सोशली रिच कल्चर है हमारा इस सोसाइटी के साथ शेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी यहाँ पर जो है 2004 के अंदर मिल्टन कम्युनिटी के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में आना शुरू हुई। और यहाँ पर जो है इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है टाउन के अंदर। इधर जो है यहाँ पर एक काउंसलर हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम कम्युनिटी को करते हैं लेकिन उन्होंने जीता है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर रीजनल काउंसलर हैं जिशान हामिद साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो है मुस्लिम कम्युनिटी लिबरल पार्टी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बड़ी अहमियत थी। इससे पहले लीजा रेड जो साहिबा थी, उन्होंने भी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर काफ़ी काम किया है। तो दोनों बड़ी पार्टियां, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, काउंसलर और मेयर सब मिलकर जो है वो शानदार तरीके से इस टाउन को चला रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी का मुस्तकबिल और आने वाली बच्चों का मुस्तकबिल इस टाउन में बड़ा महफूज है। एक बड़ी महफूज कम्युनिटी है और शानदार तरीके से काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम को जो है हम जारी रखेंगे आगे और देखेंगे कि आज की इस तकरीब के अंदर क्या होता है। But Samara, who is immediately on my left here, is one of my counselors here in the town of Milton. And for the most part, I believe and understand that she's going to be emceeing some of the programs. So it's very important that we capture, and of course it is being streamed here and being captured. So these moments usually only happen once in a lifetime, and this is it right at this moment here. So I just welcome each and every one of you here, and I'm sure that if you have a thought or a word or two other than those that Samara already has, she would afford you that opportunity. In this very building here, democracy is alive and well, and so is diversity as well. So that's what this is all about, getting together here this morning to recognize a very special month. So with that, Samara, over to you. Thank you, Worship. Thank you, Worship, Mr. Gord Krantz, for allowing us all to gather together, united as a single front to celebrate this important Islamic Heritage Month proclamation. And so I would like to start off by thanking all the people who made this happen. And of course, it starts with His Worship Mayor Gord Krantz. Thank you so much, Your Worship. With our MP, Adam Vancouverden, thank you so much, Adam. With our Councillor Hamid, who's on his way, thank you to him. To the Halton police officers who are here to join us on this special day, to Brother Salman Khan, to Brother Masood Siddiqui, who's here representing an association, a Muslim Association of Milton, to Brother Irshad Ahmad from, say, the Aisha Center, and he's also the director of the Milton Halal Food Bank. Thank you so much for your assistance. To Brother Amjad Malik
from the Milton Quran Institute. Thank you for joining us. To Brother Riaz Hussain from Markaz-e-Ahl Bayt. Thank you so much, Brother Riaz, for joining us. To Tabassum from Muslim Advisory Council of Canada right there. Thank you so much for joining us, Tabassum. And thank you to Toronto 360 team, Brother Sabir and Brother Jahangir for joining us. Thank you so much for joining everybody. Today is a special day, and as the MC, I am happy to thank everybody who made this possible, and I would now like to invite Brother Salman to come over and say a few words. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair for everyone. On a short notice, we all gather here at this historical moment for us, the town of Milton, proclaiming this as a Muslim Heritage Month, October. So I would like all especially to our Grand Imam, Sheikh Irshad Ahmad, who served in ICCM and also in the MAM, and now he is serving in Milton Halal Food and also Sayyida Aisha Center. I am also thanking all my friends who are here and helping us all and unite us and ensuring that we are a single identity as a Muslim, working for the betterment of the community as as you know, that Canada is a diversified country. So we have to come with all the goods and spread it and make the Milton the better place to live. Thank you, Jazakallah. And so now I would like to invite Brother Amjad Malik, if he would like to say a few words. Assalamu alaikum again. On behalf of Minhajul Quran Milton, I would like to thank you, Brother Salman. So, Alhamdulillah, in this third year since Minhajul Quran Milton is serving to Muslim community in this town. Minhajul Quran Milton, Minhajul Quran International, it is an Islamic organization who's providing a moderate vision of Islam and Sufism, working for peace and integration. With the guidance of our beloved Sheikh, inshallah, we will continue helping our community. I would like to thank you. I would like to congratulate again the Brother Salman, who worked hard to make this event successful. And you give us an opportunity to meet from other team members. Thank you. Thank you so much, Brother Amjad. I would now like to invite Brother Masood Siddiqui from the Muslim Milton Association. Thank you. Brothers and sisters, everyone, especially Adam, Smira, Mayor, and Brother Salman for inviting us right here, and other brothers. I'm from the Muslim Association of Milton, and I appreciate for proclaiming this month as a Heritage Month. And Muslim Association of Milton has been serving the community from 2007. Alhamdulillah, we've been conducting that, the Friday prayers and all those kind of things and renting the, because of Mayor and then the city of Milton, they gave us the opportunity to use the renting place, and then we are serving. At this place, we are working for our place of the worship, and at the end of the years, because of the community, because of the cities, all this help, we are going to complete this project end of this year. And we appreciate for city for proclaiming this month, and we appreciate for everyone. Thank you very much. We would like Brother Riaz to come up and say a few words, if that is at all possible. Thank you so much. Brother Riaz from Markaz-e-Ahl Bayt. Assalamu alaikum, brother and sister. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Mr. Adam. Thank you for Shamira calling me on behalf of Markaz-e-Ahl Bayt Milton. We are a little bit different than somebody else, but we believe in the unity is the most common things. If you proclaim your identity as a Muslim and integrate yourself with the other community, you can achieve a lot of things. Alhamdulillah, I'm living in Milton for more than 20 years. So I know that how this community grow, how we integrate our kids with the other community. So the message of the Muslims Heritage Month is integrate yourself with the other community, like the Muslims, like Christians, like Buddhists, all the other communities. There are so many small groups, but trying to achieve
the desired aim of prosperity, harmonies in among themselves. So these are the message of the Islamic centers. So I thanks again all of you inviting me. Thanks a lot. God bless all of you. Thank you so much, Brother Riaz, for those wonderful words about unity. Unity is what it is all about, like our worship, his worship just said before we all started this. Milton is a great, beautiful town where we all work together, live together, are raising our families together. So it just warms my heart to see all of my brothers today gathered and united to celebrate this special day. And last but not least, I would like to invite Tabassum to say a few words. And I'm happy to see women represented. Assalamu alaikum, everyone. My name is Tabassum Wine. I am the Executive Director of the Muslim Advisory Council of Canada. We are a not-for-profit and non-partisan organization advocating for Canadian Muslims. We are focusing on the Halton region currently. So one of our goals is to help out Muslim organizations within Halton remain economically viable. I know that the pandemic has altered all of our businesses, and we really want to step up and help you remain economically viable, inshallah. So I'm going to reach out to a lot of the organizations present here today. And yeah, I want to say thank you to Mayor Krantz for having this, and Samira and Adam Van Couverden. Thank you so much for all of your advocacy and your support in Milton. Thank you. Thank you so much, Tabassum, for saying those special words. जनाब सलमान खान साहब जो है मिल्टन मुस्लिम कम्युनिटी के चेयर भी हैं और इन्होंने आज ये खूबसूरत महफिल सजाई है। मिल्टन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कोशिश ये होती है कि तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर काम कर रही है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर उनको सबको जमा किया जाए मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर। और इसको इन्होंने आज जो है इस खूबसूरती से इसको सजाया कि आज तकरीबन जो है वो तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे और इस प्रोक्लेमेशन के अंदर। तो सलमान, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था कि इस सेरेमनी को जो है मिल्टन हॉल में मनाया जाए? नंबर एक, आप कहीं और भी मना सकते थे, किसी मस्जिद में ही मना सकते थे। और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, उनको यहाँ जमा किया जाए, उनके लीडर्स को? जी देखिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम 2013 से हम ये कर रहे हैं इस टाउन के अंदर, और मुख्तलिफ एग्जीबिशन मुख्तलिफ जगह कर रहे थे। लेकिन ये था कि ये सिर्फ एक जगह तक महदूद था। अब हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे और भी मुसलमान तंजीमें काम करी, उन सब के बहुत अच्छा काम है, उन सब काम को लेके जाए, उन सबको पूल किया जाए। तो इसी वजह से उसको पूल करने के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म मिल्टन मुस्लिम कम्युनिटी के तहत किया गया ताकि तमाम ऑर्गेनाइजेशन आए और अपना अच्छा काम जो करें वो करें। तो इंशाल्लाह आज ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे सब यहाँ मौजूद थे। हमने ये प्रोक्लेमेशन कराई है और ये निकल के सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑन किया है। और अब इंशाल्लाह हमारा मुस्तक़बिल ये प्रोग्राम है कि मिल्टन मुस्लिम कम्युनिटी के तहत हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे और जिसमें तमाम तंजीमें मिल के एक अपना जो हिस्सा है उसे भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आप लोगों की फिर एक दफ़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ी ग्रेट एफर्ट्स की और अच्छी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की मेयर के साथ, काउंसलर के साथ। आई एम रियली थैंकफुल और आपको मुबारकबाद इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। बात के आपकी ज़रा नवाज़ी एक कोशिश है, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारी ये कोशिश है यूनिटी की तरफ, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी तरफ एक कदम है। हम तमाम लोगों के अंदर जो खुसूसियात हैं वो हम माशरे के अंदर फैलाएँ। और मैं ख़ास तौर से टोरंटो 360 का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने इस प्रोग्राम को कवरेज करने में किया। और ख़ास तौर से अरशद भट्टी साहब का उनका बहुत शुक्रिया, और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है और वो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं टाउन ऑफ मिल्टन और मिल्टन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So we have here Tabassum Wine. She is coming from Muslim Advisory Council of Canada, and she is also in this ceremony which is proclaimed here today, the Muslim Heritage Month of Canada, Milton, especially 2020. So why is it important for you to come and organize this whole event? So I'm the Executive Director of the Muslim Advisory Council of Canada, and we believe that Canadian Muslims need to have their voices heard at every level, in every level of government and at every level in the community. So it's really important that we do a lot of outreach in our community, and I think this is really special here today because we have our Halton Regional Police here, we have our mayor, our MP, and town councillors. And you are the
living in this community. So what's something you are bringing to the society? Because when you are integrating with the society, so something you are giving to the society as well. So what's something important you are thinking that we should, as a Muslim, the Muslim community have to give back to this society? So we have to give our time, and not just to our Muslim organizations, to the greater community. And I really believe outreach is the answer to that, working with other organizations, such as the Halton Regional Police, with our MPs, with our municipalities. So I think that's very important that we have representation. Thank you, Tabassum, for giving some time. Thank you for your words as well. Thank you. मेरे पास जो है वो आले बैत मरकज़ आले बैत से जनाब हुसैन रियाज साहब मौजूद हैं. हुसैन रियाज साहब, पहले तो शुक्रिया आपके वक्त देने का. और आज जो ये सेरेमनी मुस्लिम हेरिटेज मंथ की को प्रोक्लेम किया गया है 2020 के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिटी जो है वो कई अरसे से ये मना रही है. आप इस इवेंट्स के अंदर स्पेशली आए, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी की यूनिटी शो करने के हवाले से और अपनी जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के हवाले से भी आए हैं. आप अपने मरकज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए क्यों अहमियत का हामिल है ये कि मुस्लिम हेरिटेज मंथ को जो है वो मिल्टन के अंदर मनाया जाए? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो काफ़ी अरसा से मिल्टन में रह रहे हैं, और दूसरा हमने बड़ा इसका वो देखा है, नीचे होते ऊपर होते कम्युनिटी को हर तरह की चीज़ें देखी हैं हमने. लेकिन हमें एक चीज़ जो है ना हमेशा वो सामने रखी है हमें, वो है जनाब आगा सिस्तानी अलैहिर्रहमा की वो हिदायत कि अगर टाउन के अंदर कोई शख्स बाहर से दाखिल हो और वो कहे कि मैंने किसी मुसलमान से मिलना है, तो तमाम लोग जो है ना मिल के आपकी तरफ या किसी और की तरफ इशारा ना करें, वो मुसलमानों में से किसी एक आदमी की तरफ जो है ना वो इशारा करें और कहें कि ये है, उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो इंसाफ भी करता हो, वो हम दीन पे अमल भी करता हो, वो हर तरीके से जिस पहलू से भी देखें वो आपको मुसलमान लगे. मुसलमान सिर्फ ये नहीं है कि कलमा पढ़ लिया और बस आप मुसलमान हो गए. मुसलमान का मतलब ये है कि आप जो समाजी ज़रूरतें हैं इंसान की उनको भी पूरा करे, दुनियावी ज़रूरतों को भी पूरा करे, तालीमी ज़रूरतों को भी पूरा करे, इखलाकी ज़रूरियात को पूरा मत रोकें किसी को. ये आगा सिस्तानी साहब का फरमान है कि किसी को मत रोकें, मिलें उनसे, बात करें, लेकिन अपना किरदार इतना आला करें कि हर आदमी आपकी तरफ देखे. तालीम की अगर कोई देखे तो कहे कि नहीं ये लोग हैं वो जो तालीम में भी आगे हैं. अगर कोई कहे कि मुझे डॉक्टर चाहिए तो वो आपके घर में से डॉक्टर होना चाहिए. मुस्लिम हेरिटेज मंथ मिल्टन में मनाना ताकि लोगों को पता चले कि मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से समाजी इंटरेक्शन करते हैं, किस तरीके से अपने हमसाए का ख्याल रखते हैं, किस तरह सफाई का ख्याल रखते हैं. ये सारी बातें हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन रियाज साहब आपके टाइम देने का. और इस प्रोग्राम के अंदर शानदार तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने ये शानदार तरीके से हेरिटेज मंथ का आगाज़ किया इस साल. तो आई होप कि आपकी कम्युनिटी भी जो है इस हवाले से कोई ना कोई प्रोग्राम रखेगी अपने मरकज़ के अंदर और हमें भी बुलाएगी. थैंक यू फॉर योर टाइम सर. थैंक यू. तो उस्मान जो हैं वो एक्टिविस्ट हैं, सोशल पॉलिटिकल हर तरह के एक्टिविस्ट हमें नज़र आते हैं और बड़ी हर जगह नज़र आते हैं, और मिस आगा के अंदर भी बल्कि नज़र आते हैं, मिल्टन में भी नज़र आते हैं, और बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं आप सोसाइटी के अंदर और लोगों को जमा करने के हवाले से. तो उस्मान, आपके लिए क्यों अहमियत है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है इस हेरिटेज मंथ का फ़ायदा उठाए और जो है वो अपनी जो सोसाइटी है दूसरों के साथ मिल के एक बेहतर काम कर सके और पॉजिटिव तरफ जाए? तो आप क्या देख रहे हैं कि ये मंजरनामा नज़र आ रहा है यहाँ पर मिल्टन के अंदर कि मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ रही है? जी, थैंक यू सो मच. बिल्कुल बढ़ रही है, और जैसे कि बाकी सब ने कहा कि जो मुसलमानों का किरदार है इस शहर में, जैसे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो हम काम कर रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए कि वो देखें किस तरीके से इस टाउन ने एम्ब्रेस किया कि हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उसको रिकग्नाइज़ किया. तो ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा है, उनको फ़ख्र महसूस होगा कि वो ऐसी चीज़ का हिस्सा हैं जिसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है.
تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. سلمان خان صاحب جو ICCM کے ہیں, مناج القرآن کے امجد صاحب, باقی مساجد کے جو لوگ آئے ہیں, ان کا بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ سب مل جل کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک ہم سب میں اتحاد نہیں ہوگا ہم سب آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے. الحمدللہ ہم نے یہ اچیو کیا, اور ہم جیسے میں نے پہلے کہا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو سی what we have accomplished today and what they can get out of it, and everybody else can see how beautiful this religion is. بہت بہت شکریہ عثمان. تو میرے ساتھ یہاں پر مناج القرآن ملٹن چیپٹر کے جناب امجد ملک صاحب موجود ہیں. امجد ملک صاحب بہت بہت شکریہ ایک تو ٹورانٹو 360 کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کا, اور میں چاہوں گا کہ جس طرح دوسری جو آرگنائزیشن یہاں پر آئی ہے, آپ کی آرگنائزیشن بھی ماشاءاللہ اس کا حصہ ہے, جو آج اسلامک ہیریٹیج منتھ جو ہے پروکلیم کیا گیا میئر کی طرف سے. تو کیوں امپورٹنٹ تھا, کیوں اہم تھا آپ کے لیے کہ اس سیریمنی میں آئیں؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کو جہانگیر بھائی اور ٹورانٹو 360 چینل کو. آج کا جیسے جو ایونٹ تھا تو اس میں مین اس کا فوکس یہی تھا کہ جتنی تنظیمات جو لوکلی کام کر رہی ہیں تو ان کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم ملے, تو جہاں موقع ملے جہاں بیٹھ کے ایک دوسرے سے آپ ملیں اور اپنی جو چیزیں آپ شیئر کریں. آج بذات خود مجھے کچھ جو دوسری تنظیمات ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں ان سے میں ملا ہوں, اور بڑا اچھا وہ ہمارا وہ رہا ہے ان کے ساتھ. انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو اسی طرح رہیں گے. جہاں تک مناج القرآن ملٹن چیپٹر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ 2 سال سے 2.5 ایئر کام کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو مناج القرآن کی جو کینیڈا ٹیم ہے ان کے ساتھ ہم کنٹینیو ان کے ساتھ لنک میں رہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو سروسز ہم وہاں پہ اس لیول پہ دے رہے ہیں وہ سروس یہاں لوکل کمیونٹی کو بھی دیں. تو ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ 2-3 سال سے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سینٹر مناج القرآن, اور آپ لوگ جو ہے یہ جو ایک اسٹیڈیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ تراویح بھی کراتے ہیں. تو یہ مسلم کمیونٹی آپ کی آرگنائزیشن اسپیشلی کیا چیز ایسی کر رہی ہے کہ جو یہاں پر جو تمام دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے؟ کوئی ایسا کام آپ لوگ کر رہے ہیں جس سے تمام سوسائٹی کو فائدہ پہنچے؟ صحیح جہانگیر بھائی, ایسا کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ مناج القرآن کی کوئی لوکلی تنظیم تو ہے نہیں. یہ ہم یہاں پہ, اور ہمیں پاس پورا ایک ایسا ہمارا سیٹ اپ ہے, انفراسٹرکچر ہے جس پہ بیس پہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اور ہمارے پاس رول آف ریگولیشن گائیڈ لائنس ہیں. اسپیشلی ہم جب اپنے شیخ کو بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے جو ہمیں گائیڈ لائن ملی ہمیں اس کی بیس پہ ہم اس کو ایز اے اپنے وہ لیتے ہیں, گائیڈ لائن لے کے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ لوگوں کو بیسٹ کوالٹی آف سروس پرووائڈ کریں. اور اس میں چاہے بیسٹ اسکالر ہو, قاری ہو, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آلریڈی پرووائڈ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کنٹینیو کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ امجد ملک صاحب کہ آپ کا یہاں پر ٹائم دینے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. میں اگین آپ کو اور جہانگیر بھائی اور آپ کی جو پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ملٹن میں یہاں پہ آئے. تھینک یو. میرا نام مسعود احمد صدیقی ہے, میں مسلم ایسوسیشن آف ملٹن سے ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام دوستوں سے, سامعین سے, کہ وہ ٹورانٹو 360 کو واچ کریں. یہ بہت اچھا چینل ہے, میں ویسے بھی واچ کرتا ہوں. Ladies and gentlemen, I'm Gord Krantz, Mayor of the town of Milton. Whatever you do, please keep watching Toronto 360 TV, the best in the country. Have a great day. Stay healthy. Stay safe. Thank you. I would now like to invite Officer Ryan from Halton Regional Police to say a few words. Thank you. Because I'm so tall. On behalf of the police service, the Halton Police Service, thank you guys so much for inviting us, Salman. Thank you for reaching out to me and inviting us. Our police service has had such a strong relationship historically with the Muslim community, and we will continue to have a strong relationship. So it's events like this that only strengthen our friendships with all you. So thanks to the mayor for letting us inside today with the weather out like that. So thank you very much. I think everybody's happy for that. Adam, thanks for coming. That's great to see you. But yeah, so as we move forward, I think we're dedicated to our robust diversity plan. I oversee our Equity, Diversity, and Inclusion Bureau, so I think I'll have an opportunity to work with probably every one of you in the future. But again, on behalf of all our members, thank you very much for having us. It's an honor to be here.
and enjoy the rest of the day. So thank you. Words. Now, I would like to invite our MP, Adam Vancouverton, to say a few words and also hand out the special certificate he has. And then in the end, we'll have his worship come out. And special thanks to Adam for making time because he is so busy and he had to cancel a few events just to get here. So a huge round of applause for our MP, guys. And this month, in October 2020, we are celebrating Islamic history and celebrating more than just Islamic history. We're celebrating the Islamic present as well here in Milton and what being a Muslim means in Milton. And from what I've learned over the last couple of years working closely with this and various other groups is that it's about generosity of spirit. It's about an opportunity. When you see an opportunity to give, you get to work and you help people. So we're not only just celebrating the diversity that is the fact here in Milton, we're celebrating the diversity within the Milton Muslim community because there's Muslims from Africa, there's Muslims from Southeast Asia, there's Muslims from the Middle East. There's, it's also important to recognize that there's Muslims who are persecuted around the world still, and we had Bob Ray in town educating many of us about those issues just last fall. So as a government, we have a robust anti-Islamophobia strategy, but we want to hear from you. We want to work to combat anti-Islam and Islamophobia and racism and hatred of all kinds. And one of the best ways is to celebrate that diversity, educate people, and talk about what we're trying to achieve as a community. So I brought a couple of certificates. I should have brought one for everybody, and I apologize for that. But I do want to acknowledge the organizers of today's event, and that's Mr. Salman Khan and Tabassum Wine. If you guys would come up, we distributed these yesterday, but we decided to hold on to them and do it once again. It's just a small token of our appreciation in the office just across the street. But as you guys are well aware, our office is right there, and we're more than happy to help you, whether you're working with seniors organizations or with youth or with sports, whatever it is. Just drop in my office and let us know. It's been a tough summer, but there's a bright future ahead, and there's definitely a light at the end of the tunnel. So thank you, everybody, for being here today, and thank you for all of your incredible work in the community. Merci. A little button you can click, which is just request a certificate for anybody who's going above and beyond in your community. I'd be happy to come and recognize their hard work. Thank you. That was such a heartwarming sight to see that, we are all getting recognized, and all the people who are doing such hard work as Brother Salman and Tabassum and Brother Masood, Brother Amjad, Brother Ishad, Brother Riaz, everybody who's working hard in this community gets recognized, be it by our MP or our Mayor, Gord Krantz. And on that note, I would like to invite him up here to read his proclamation, and him and I can do the tango. Well, Samira, you're absolutely right. You and I are going to be doing our thing here in just a brief moment. But first of all, the words of wisdom that was spoken here this morning has a lot of meaning in it. And of course, I'm a pretty good listener, not only as well as being a pretty good talker as well, but doing more listening than talking sometimes is advantageous. And of course, I'm sure that all of us is listening to the words that we have to share with one another this morning here. So I just want to thank each and every one of you. Capturing the moment is really what it's all about. And you hear it quite often. We're in this together, and how true that is. In Samira's case, my case, we're in it together. There's 9 of us elected people that's truly in it together in this corporation. And we believe in sharing and sharing alike. So that's going to happen here in just a brief moment. Samira is well aware of the way that I operate, as some of you do. One of the things as well, a lot of you are aware that I was born with a fairly good voice, and I haven't even turned it up yet. So brace yourself. Hey! Mayor's proclamation, Islamic Heritage Month. Whereas the Islamic Heritage Month provides us with an opportunity to learn about rich Islamic history and culture within our town. And whereas during the Islamic Heritage Month, we are reminded of the many contributions Muslims have made to the economic, political, social, and cultural fabric of our town. And whereas
residents across the town are encouraged to learn more about Islam and to participate in activities throughout the month that celebrates our town's Muslim community. And whereas the town of Milton acknowledges the valued contributions that the Muslim community of Milton has made to strengthen our society, diversity strengthens us socially, politically, culturally, and economically. And as one of the most multicultural towns, Milton has become a role model town where all religions, faiths, and beliefs are respected and accepted. Now, therefore, I, Mayor Gordon Krantz of the town of Milton, do hereby proclaim October 2020 as Islamic Heritage Month in the town of Milton and encourage support of this campaign. Properly signed and sealed the seal of the corporation of the town of Milton. Harry! Harry! Now, if I could suggest, Samira, the appropriate people coming up here, capturing the moment and receiving this official proclamation. So. So I want to invite another Mayor. Thank you for your time and this beautiful ceremony you organized here in the hall as well, Milton Hall as well. And I really, from the behalf of our TV as well as the Muslim community, I really want to appreciate that the beautiful ceremony you organized today. So, sir, why is so important for you that we all will be part of this Muslim Heritage Month in the October 2020? So why is it so important? Well, one of the things, and if I could be so bold to suggest, it really starts from the top down. Leadership is really what it's all about. And I take that role very, very serious on having inclusiveness. And you made mention about this small group that we have here today. Getting a small group together, it's like planting an acorn for a mighty oak tree. First of all, you have to plant that seed, and then that mighty tree will grow. It's the same as what we're doing here. We're planting that seed, and that's what it's all about for society, making a better world to live in. So I just want to thank the media especially. The media is so important on getting the message out there, and I just thank them very much for that. And I do know that people tune in, especially in these pandemic times, to find what's going on in the world. So this is really what's happening in Milton here, and I just thank the media and you too, sir, for what you do on keeping all of us informed. Thank you. One last question, Mayor, because I know that this Milton community, especially the town of Milton, is one of the fastest growing Muslim community. And I know that they are bringing a lot of cultures and different things. What's something you feel that this community is bringing strongly to your town as well? Well, one of the things that I think it attracts, and I'd like to think tongue-in-cheek that it's all about me, it's not. It's about the people that are here. It's the people that make it the great community that it is. Great place to work, great place. We're the youngest community in Ontario, age-wise. We've got tremendous open green space, and we accept one another. We really do work together, even though from time to time we'll have our differences. There's no question about that. But we can always resolve them. And every once in a while, I have to get involved every once in a while on helping to resolve some of those differences. But you get reasonable people, you get reasonable solutions, and that's why it works so well here in Milton. Thank you for your time, Mayor, once again, and we are organizing this beautiful ceremony. We will talk to you time to time. Thank you, sir. Thank you very dignitary, here's another on this Muslim Heritage Month proclamation ceremony. And I want to thank you first to give the time to the Toronto 360 team as well. So, Adam, you are the MP of this town, and I know that during your campaign, we saw a lot of Muslim community supported as well. So you have a very good support of the Muslim community in this town as well. So why is it so important for you to come to this ceremony and proclaim the Muslim Heritage Month as in October 2020? Well, I think the most important thing about Muslim Heritage Month, Islamic History Month, is that we're all learning. And as a non-Muslim, I have an opportunity to learn anytime I engage with your community. And really, if we're going to celebrate our diversity, because truly in Milton, in Ontario, and across Canada, and I believe in the world, diversity is our strength.
It's worth celebrating, but it's also worth learning a little bit. So the reason it was important for me to come today is to meet some people, to keep learning, to keep expanding that perspective that's so important for me as a representative for people in Ottawa. Because when I go up to Ottawa, it's my opportunity and my job, my obligation to represent everybody here that lives in Milton. And that's not, frankly, that's not just, liberals or a specific type of person. That's every single person in Milton. And the diversity of opinion and background and thought, religious experience and commitment, whatever it is, it's my obligation and my honor to represent everybody. So it was a wonderful celebration today, a really great acknowledgement of how diverse and wonderfully inclusive Milton is. And it was an honor and a privilege. And, I'll never turn down the opportunity to celebrate diversity because truly in Canada and certainly in Milton, diversity is our strength. So I just want to ask, because I know that you are a wonderful sportsman and athletes as well, and you are the honor for as well for the whole society and the Canadian society to win the various medals for this country. So I know that you are working with the youth. Did you find that Muslim youth are really a good sportsmen and athletes as well? Of course, they're wonderful sports people. They're also wonderful young burgeoning politicians. They're wonderful at music. But the one thing that I find in particular here in Milton with my youth council here, the federal youth council here in Milton, is how committed they are to their country and to their community. They want to show up to do community cleanups. They want to talk about policy. They want to talk about diversity. We're here with the Halton Regional Police, and Ryan Smith is the officer in charge of diversity, equity, and inclusion. And he's coming out to our next youth council meeting to engage with the youth, to answer their questions, and to respond to their perspectives and insights. So absolutely, the young people in Milton and across the country are certainly, they're not just our future, they're our present as well. Thank you, Adam, for your time you're giving for the Toronto 360, and inshallah we will meet again. Thank you. हमारे साथ यहाँ पर जो है वो सिस्टर समीरा हैं, जो कि काउंसलर भी हैं वार्ड 4 की यहाँ पर मिल्टन के अंदर, और आज की जो एमसी भी थी सेरेमनी की, पहले तो खूबसूरत महफिल सजाने के ऊपर कि आप लोगों ने शानदार महफिल सजाई है और हर साल से काफ़ी अरसे से ये मनाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही प्रोक्लेम करते हैं कि यहाँ का जो टाउन ऑफ मिल्टन है, तो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एज ए काउंसलर कि इस मुस्लिम हेरिटेज मंथ को जो है ना मनाया जाए और मुसलमानों को क्या एक्चुअली यहाँ पर करना चाहिए? बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत ही आपने सही कहा, ये बड़ी खूबसूरत महफिल थी आज, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे मिल्टन में वो सब आज यूनाइटेड थे टू कम आउट एंड सेलिब्रेट दिस इम्पॉर्टेंट डे। और आपने ये कहा कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमान बहुत कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे टाउन में, और इसी वजह से हमने ये प्रोक्लेमेशन रखी है ताकि हम अप्रिशिएट करें उनके एफर्ट्स को। जो मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पे कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही है उसको हम एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें और इनकरेज करें कि उसको कंटिन्यू करें एंड डू बेटर एंड बेटर। और इसी तरह टाउन ऑफ मिल्टन सारी कम्युनिटीज़ को अप्रिशिएट करता है, सारी कम्युनिटीज़ को सराहता है, उनको इंकरेज करता है कि वो बेटर से बेटर करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर कि आपने खूबसूरत मैसेज दिया। अच्छा, आपके लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के डिफरेंट चैप्टर्स हैं या मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, आज आपने उन सबको यहाँ पर तकरीबन जमा किया हुआ था। मैम यहाँ पर आई हुई थी, ICCM यहाँ पर मौजूद था, आले बैत मरकज़ वाले यहाँ मौजूद थे, और भी बहुत सारी, और जो हमारी तारिक कादरी साहब की जो है पिनाजुल कुरान वो भी यहाँ पर मौजूद था। तो कितना इम्पोर्टेंस था ये आपके लिए? ये तो देखा जाए तो दीन का बेसिस ही यही है कि सब मिलजुल कर अच्छा काम करें जहाँ रहते हैं, तो बस उसको लेके चले थे। और इसमें ज़्यादा काम हमारे सलमान भाई का है जो ICCM के हैं, और मैंने तो उनकी मदद की थोड़ी बहुत, जो भी मैं टाउन काउंसलर के हैसियत से उनको फैसिलिटेट कर सकती थी वो मैंने की, लेकिन आइडिया वो लेके चले थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, टोरंटो 360 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा कम्युनिटी में जहाँ भी अच्छा काम हो रहा होता है आप वहाँ जाके हमारी आवाज़ को और एम्पलीफाई करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके वक्त देने का, बहुत बहुत थैंक यू। सो रायन, especially this Muslim Heritage Month, I just want to understand that how it's important for you to come here and celebrate and proclaim this ceremony. Yeah, well, I think it's important for us as a police service to recognize, diversity both within our police service and outside of our police service. So it's important to come here because the Muslim community in our region is so strong and it's growing, and we recognize that, and it provides us an opportunity to better understand and learn, and then better provide services to that group. So, as we come out to these events and we get to chat with everybody, and as the Muslim community grows, we just gain more friends as a police service, right? Thank you, Ryan, for showing up here. One last question to you, because I know that the police is doing a special job
for the keeping the peace, peaceful society. So one of the area that I talk with the several people in the community, they have the concerns about the drugs in the high schools as well. So what's something you guys are doing, the importance for that one to stop those areas? Yeah, so we're lucky in our region because we have strong relationships with the school boards. So we have a high school liaison officer program, both actually in the high school and the elementary schools. So we have officers in the school providing education and just being kind of boots on the ground to engage with the youth and better build relationships with the youth and try to deter the youth before they actually get involved in that. Outside of that, it's about education. It's about educating the community about the work that we're doing, and again about the challenges that come with any type of drug use. So we're lucky, again, we have great relationships with the school boards. We're in the schools, we're engaging with the youth, and that in itself is a preventative measure for us. So Thank you, Ryan, for giving us the time and say the few words. Thank you. मेरे साथ यहाँ पर जो हैं वो हाफिज शाह साहब हैं, इमाम भी हैं सैयदा आयशा सेंटर के, और हलाल फूड्स भी एक चला रहे हैं यहाँ पर. तो ये आज यहाँ पर इस सेरेमनी में जो कि मेयर ने ऑर्गेनाइज की थी और यहाँ के काउंसलर्स ने ऑर्गेनाइज की थी कि प्रोक्लेम किया था इस मंथ को 2020 अक्टूबर को, और जो हर साल ही फेडरल और एंटारियो गवर्नमेंट दोनों ही अनाउंस करती हैं कि अक्टूबर का जो महीना है वो मुसलमानों के लिए जो है वो मुस्लिम हेरिटेज मंथ के तौर पे मनाया गया है. तो हाफिज शाह साहब, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप जब ये आज सुबह सुबह इधर आए और आपने सेरेमनी के अंदर जब आपको दावत दी गई तो आप यहाँ पर आए, क्यों इम्पोर्टेंट है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि वो इस मुस्लिम हेरिटेज मंथ के अंदर एक आए और इसको मनाए, और क्या चीज़ हम शो करें इस कम्युनिटी को कि जो कि यहाँ की कम्युनिटी के लिए भी यूज़फुल हो और सबके लिए यूज़फुल हो? थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मौका दिया है कि इन लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया, हमारी हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज़ किया. इससे हमने फ़ायदा उठाना है और इस कम्युनिटी के लिए भी हमने इस्लाम का जो पैगाम है उसको इस कम्युनिटी तक पहुंचाना है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए दरवाज़े खोल दिए. अब अगला काम जो है वो हमारा है कि हम इस कम्युनिटी के साथ मिलजुल के न सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में इनको एजुकेट करें, बल्कि इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा, तो जस्टिस, फेयरनेस, कर्टेसी, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें मोर इंक्लूसिव हो के इस कम्युनिटी को इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं उनके बारे में भी एजुकेट करना चाहिए. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है जो हम तक पहुंचा, उस पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाना है. बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब कि आपने ये खूबसूरत मैसेज जो दिया है इस हवाले से, मुस्लिम हेरिटेज के हवाले से. मेरे पास एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ मिल्टन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मसूद साहब. मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो इस ब्यूटीफुल सेरेमनी को आप सब लोगों का जो है ना बहुत बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया है कि सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस खूबसूरत महफिल को सजाया है. और क्या अहमियत थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन इन दिस टाउन एज वेल, जो बहुत बड़े बड़े इज्तिमात करती रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़ी अहमियत है उसकी. तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि इस सेरेमनी को आएँ और मुसलमान जो हैं वो इस सेरेमनी को सही तरीके से मनाएं, बल्कि अपने आप को जो है सोसाइटी के साथ जो है वो शामिल करें? थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, और आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड टेकिंग दिस इंटरव्यू. And Muslim Association of Milton, serving Muslim community in Milton last around 12 years, like 2007, since we are serving. And we renting that, we don't have the place of worship at this point. तो हमारे पास अपनी जगह नहीं है. And we are renting the place, alhamdulillah, in the sports center and other facilities from the city. And alhamdulillah, it's working fine. But we, since 2015, we are working to have our own place of worship for the Muslim. Alhamdulillah, we have the place, and like it's place, but still on the construction phase. It is on the regional road 25, 4269, and we are hoping, inshallah, construction जो है ना end of this year हो जाएगी. और आपने जो पूछा है आरिफ भाई का question about this event, सलमान भाई की तरफ से शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया है, और तमाम कम्युनिटी को जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो ग्रुप्स हैं वो सर्व कर रहे हैं, उन सबको इनवाइट किया यहाँ पर. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ बिग इवेंट राइट हियर.
اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس ہوگی, سٹی کو اویئرنیس ہوگی کہ مسلم کمیونٹی کیا کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, اور کس طریقے سے مسلم ہم سارے اس کو سرو کر رہے ہیں. سو دس از اے گڈ اسٹیپ انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ. اس کو ہم پھر ایکسپینڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی سلمان بھائی کا کچھ اس میں انیشیٹو بھی لے رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملٹن کے اندر اس وقت 20 to 25% آف جو پاپولیشن ہے وہ مسلمانوں کی ہے. تو اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر 1,30,000 ہے تو 25,000 سے زیادہ مسلمان ہیں. تو کیا ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہم جو 25,000 مسلمان ہیں, کیا ہم ایز اے مسلمان جو ہیں وہ اپنی دوسری کمیونٹی کو, جو دوسرے لوگ ہیں, کیا ہم ان کو کچھ اپنا مسلمانوں کا جو ہے ہیریٹیج وہ دکھا رہے ہیں یا نہیں ہے. دوسرے کمیونٹی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمانوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ہمارا جو اسلام ہے وہ کیا پیس کا جو میسج دے رہا ہے, تو وہ ہم کس طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں. تو مسعود صاحب, ایک تو بڑا اہم کام جو آپ لوگ کر ہی سکتے ہیں, میرے خیال ہے یہاں پر جو لوگ آرگنائزیشن کے اندر موجود تھے, کہ سب لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈونیشن نکالے اپنے باکسز سے اور مل کر ایک بڑا چیک بنائیں, اور ہاسپٹلس کے لیے یہاں پر جو اور دوسرے کام ہو رہے ہیں اس کے اندر مل کر جو ہے وہ مسز آغا ملٹن مسلم کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک کام تو اس ہیریٹیج میں کر ہی سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں جو عارف بھائی آپ نے جو کویشچن کیا, ویری گڈ کویشچن. تو اس کا میں تھوڑا سا میں مطلب ایز اے مسلم ایسوسیشن دا ملٹن, میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ سنس لاسٹ 11 year وی آر ڈونیٹنگ ملٹن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل every year. So we already donate around $60,000 for the hospital constructions. So every year we conduct, the barbecue. It's a community barbecue, and we raise the money and we donate. Even though this year there was no barbecue because of the COVID-19, even because of that, we still, promised to the district hospital that we are going to donate $5,000 inshallah. And there is one room in the sonography room, I guess that in the Milton District Hospital with the name of the Muslim Association of Milton. Inshallah, آپ کا جو کویشچن ہے, آپ کا کویشچن از ویری ویلڈ کہ انسٹیڈ آف مسلم ایسوسیشن آف ملٹن ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو ایز اے کمیونٹی ایک ہاسپٹل جو کہ ساری کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے, ان کو ڈونیٹ کرنا چاہیے. ناٹ اونلی دس, وی ہیو ٹو سی دیٹ ہاؤ وی کین سرو دا ادر کمیونٹی. ہم نے جب سے یہ کووڈ-19 ہوا تھا تو ہم نے فوڈ بینک بھی شروع کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارا جو یہاں پہ ہالٹن لرننگ سینٹر ہے 550 اونٹاریو اسٹریٹ پہ, وہاں پہ فوڈ بینک ہے. اٹس ناٹ فار دا فوڈ بینک اونلی فار دا مسلم, اٹس فوڈ بینک فار ایوری ادر ریلیجن. سو اینی باڈی کین کم واک ان, وی کین گیو دیم, اینڈ وی کولیبریٹ ود مسلم ویلفیئر سینٹرس. تو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نان پیرشبل فوڈ جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں, اور ہم جا کے ایکسٹرا جو ہوتا ہے وہ جا کے مسلم ویلفیئر کو دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو یہاں پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان کو بھی سرو کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس قسم کی جو ایونٹس ہیں, جیسے خاص طور پہ اب دیکھیں کووڈ-19 کا ہے, اس میں لاٹ آف پیپل, ناٹ اونلی دیٹ دا ادر بٹ مسلم آر آلسو سفر ود دیٹ تھنگ. وی ہیو ٹو give them, help those people who are suffering with these kind of thing, and we as a community we have to go together and help those kind of. بہت بہت شکریہ آج کے ٹائم دینے کا, ٹورانٹو 360 کو اور اس خوبصورت محفل کو سجانے کا. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. عارف بھائی تھینک یو ویری مچ, صابر بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپرچونیٹی دی, آپ یہاں آئے اس موسم میں, موسم بھی خطرناک ہے, پھر بھی آپ لوگ آئے, اور تھینک یو ویری مچ. آپ کو اللہ سب کو, ہم سب کو جو ہے نا اس کووڈ-19 سے سیو کرے. جزاک اللہ. تو ناظرین, آپ نے آج ہماری جو یہ ٹرانسمیشن دیکھی, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ٹاؤن آف ملٹن کی خوبصورت تقریب کو جو ہے یہاں سے ٹاؤن ہال سے جو ہے نا آپ تک پہنچائیں. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشلی میئر کا, کہ میئر نے جو ہے وہ کافی ٹائم دیا ہے, اور آج یہ پروکلیمیشن جو سمیرہ علی اور میئر نے پڑھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا اس کمیونٹی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور کے اندر مسلم کمیونٹی اور تمام یہاں کے جو سوشل پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کریں گے, اور ہمارے نوجوان جو ہیں اس ٹاؤن کی ترقی کے اندر یقیناً جو ہے وہ ایک بڑا رول ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر ہیں, اس وقت اسپورٹس سینٹرز میں ہیں, لیکن یقیناً ایک سوشلی اور اکنامکلی اس ٹاؤن کو اوپر لے کر جائیں گے. شکریہ عارف جہانگیری اور صابر گایا کی طرف سے تمام ملٹن کے سوسائٹی کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کسی پروگرام کے اندر ملٹن کو کوریج کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مسعود احمد صدیقی ہے. میں مسلم ایسوسیشن ملٹن سے ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام دوستوں سے, سامعین سے, کہ وہ ٹورنٹو 360 کو واچ کریں. یہ بہت اچھا چینل ہے, میں ویسے بھی واچ کرتا ہوں. Ladies and gentlemen, I'm Gord Krantz, Mayor of the town of Milton. Whatever you do, please keep watching Toronto 360 TV, the best in the country. Have a great day. Stay healthy. Stay safe. سے پیار لیے, پیاروں کا اظہار لیے, آئیں ڈھیروں سوغاتیں خوشیوں کے لمحات میں, اپنوں کا پیغام لیے, کیا کیا تحفے لائے ہم آپ کی خاطر. In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts.